तो क्वेश्चन है एग्जामिनिंग द फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन में दोनों ही चीजें पूछी गई है इनफॉर्मल सेक्टर से कि हाउ इट इज फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एट द सेम टाइम, राइट। सो द इंट्रो इज रियली गुड, लाइक नो कीथ हार्ट का ही ये कॉन्सेप्ट है, जो इनफॉर्मल सेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया वो उन्होंने ही दिया था। सो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हिम, एंड उसके बाद में वी टॉक अबाउट फंक्शन फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में फंक्शनल पहले आया है, तो वी वुड बी डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। सो या व्हाट आर द फंक्शंस? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है। उसके बाद में सोशली जो वीमेन है उनको काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया के अंदर फॉर्मल जॉब्स के बाद देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टिल अनएम्प्लॉयड एंड लाइक लुकिंग फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड, सो इकोनॉमिकली उन्हें स्ट्रांग करता है। एंड इफ दे ऑल्सो इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर भी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब ज्यादा ना you need to have the specialization in the same, alienation बहुत कम हो गया इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से, means everyone is having some or other job, so because of that they are really like no more isolated at that stage as earlier they were, ठीक है। उसके बाद में और जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल दोज इकोनॉमिकल सोशल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। विमेन को काफी empower भी किया एंड लाइक दैट हेल्प्ड टू स्टॉप ऑल दोज सोशल इविल्स व्हिच वर हैपनिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर, सो ओके, इनफॉर्मल में तो इन्होंने डिसफंक्शन दे भी रखे, बट यार यही हो जाएगी कि सोशल सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जोमैटो या स्विगी या जितने भी ये मतलब ना लाइक इनफॉर्मलाइजेशन जो हो गया है, इनफॉर्मलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ है, जो विमेन है, ठीक है, विमेन का हरेसमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया है। वाई? सो बिकॉज सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जो लेजिस्लेशंस रिक्वायर्ड है, सो वो लेजिस्लेशन भी नहीं होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। उसके बाद में लाइक नो जैसे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पॉइंट इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज सच इतना भी नहीं रहता है इनफॉर्मल सेक्टर में। मीन्स अगर फॉर्मल में तो व्हाट हैपेंस कि आपने फॉर्मल लेवल पे आपने एग्जाम दिया है या मतलब आपको हायर किया गया, रिक्रूट किया गया, उसके लिए देयर वुड बी अपॉइंटमेंट लेटर और सम लाइक फॉर्मल formalities would be there, but on the like no corollary we discussed, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि वहां पे आपको ज्यादा सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड नहीं होती है, उसके बाद में कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो यू आर जस्ट हायर्ड ऑन द कैजुअल बेसिस। वंस योर वर्क इज लाइक नो ओवर द दे विल फायर यू, सो like all those things are there, migration would be more and like alienation zyada ho jayega, so all those things would be there। yeah, Sparsh, if you want to add something, and also like for conclusion में positivity पे we can over कि informal sector भी important है इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहाँ पे there is like no very less employment rate बहुत ज्यादा कम है, तो उसकी वजह से there is a need कि इंडिया के अंदर informal jobs भी हो, so that no people can at least earn their livelihood and can go forever। सही। डिसफंक्शंस में हम वो भी डाल सकते हैं ना कि सोशल लेवल्स लाइक ये चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, ये सब भी चल रहा है साथ में, मतलब ये एनकरेज होता है इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से। लेते हैं आंसर। तो Keith Hart coined the term informal sector. It is characterized by the following। फिर एक फ्लो चार्ट है इनफॉर्मल सेक्टर का: एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लो प्रोडक्टिविटी, माइग्रेंट लेबर, फेस टू फेस रिलेशनशिप और लैक ऑफ फॉर्मल रूल्स। तो फंक्शंस है employment, large population is engaged in it. For example, more than 90% of workers of India are engaged in it. Even low skilled workers get job. Contribution to GDP growth, for example, informal sector contribute to about 45% to GDP of India. More interaction between workers in such units reduces alienation. More jobs for women, it leads to women empowerment.
डिसफंक्शंस में लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, बैड वर्किंग कंडीशंस, emergence of slums, no job security because of lack of contract, child labor, for example, BD factories in India mostly engage child labor. Hence, informal sector has both functions and dysfunctions. Countries should try to reduce their informal sector to give more job satisfaction and social security. Okay, I think we should go to next question now. बाकी इसमें जो remarks दिए गए हैं conclusion is quite well written, so almost things like no बहुत अच्छे से लिखा गया है. इंट्रोडक्शन भी काफी सही था एंड ऑल्सो लाइक नो थिंकर इम्पोर्टेंट है तो कीथ हार्ट जैसे है तो वो इसमें आ जाएगा. स्ट्रेटिफिकेशन का व्हेन वी टॉक अबाउट तो उसमें वो क्विथविम्स और रॉकिन आ जाता है. ऑकबर्न आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल लैग थ्योरी नो. सो इस तरीके से जो लाइक ईच टॉपिक पे एक एक थिंकर है वो तो यू शुड रिमेम्बर एंड बाकी एक आधा थिंकर इफ यू कैन कॉट एनीवेयर तो दैट वुड बी रियली ठीक है. Next question है discuss the role of questionnaire as a tool of data collection in sociological research. See, in this question, no, you have to mention the goal. So better would be like you start with the definition as we did in the last question. कि वहाँ पे informal sector का भी have mentioned. So here you can do the same questionnaire and also questionnaire is somewhere no quantitative approach है in which you are just no observing any experiment or research and that might give you the valid results as well. ठीक है तो वो ज्यादा practical भी होता है. एंड इसकी वजह से क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल वो था जो फिनोमेनोलॉजिस्ट का और इंटरप्रिटेटिव का जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म था ठीक है तो वो भी एक टाइप से वही था कि उसमें यू आर ऑब्जर्विंग कि हाउ दे आर प्लेइंग थ्रू द स्टेजेस ठीक है. तो उसमें जैसे जो अल्फ्रेड स्कल्स था तो उनका मेंशन किया जा सकता है ठीक है. एंड ऑल्सो लाइक क्वेश्चनर में मेनी टाइम्स ना रिलायबिलिटी बहुत अच्छी रहती है बाय सो बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस आपने मल्टीपल लोगों से पूछे and because of that you will get the same results है ना. So that will bring the reliability to that. So more or less ये qualitative से ज़्यादा quantitative है means we are depending upon the datas and datas are many times like no they are really good than the qualities because qualities can change but जो quantity है तो वो same रहती है तो that also helps that helps in the empirical observation as well and like then you can conclude it with पॉजिटिव नोट की ठीक है जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको यूज किया बट यस रिलायबल के साथ साथ एक और इशू है कि ये क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या यू आर जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डाटा एंड यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स इट्स क्वालिटेटिव साइड विच कैन बी लाइक नो इंटरप्रिटेटिव नेचर में हो सकती है. तो सब्जेक्टिविटी का इशू रहेगा तो ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी बट सब्जेक्टिव भी होती है कई चीजें तो जो सोशियोलॉजी है वो खुद एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ठीक है. तो जब जिस चीज में सब्जेक्टिविटी होती है तो देयर इज अ केस कि आपका वहां पे फैक्ट एंड वैल्यू और वो सब ना बायसनेस आया होगा तो यू कांट रियली से कि सोशियोलॉजिस्ट जो है दे शुड लाइक नो 100% रिलाई अपॉन द cautionary approach. So this is how we can like no complete the answer. You can just put your view as well. करेक्ट है डेफिनेशन डाल देंगे फिर पॉजिटिव्स बता देंगे थोड़े क्वेश्चनेयर के कि ये थोड़ा मतलब चीप मेथड है और फास्ट है और हमें ये क्वांटिटेटिव डेटा मिल सकता है इससे. हाँ वही इंटरव्यू का वो नेगेटिव्स में बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन मतलब इंटरव्यूअर है वो अपना बायस हो सकता है इसमें क्वेश्चन चूज करने में और कई बार जो आंसर देने वाले लोग हैं वो भी गलत आंसर भी डाल सकते हैं.
Exactly. Questionnaire is an instrument in sociological research in which a set of questions are administered to individuals for their response. Role of questionnaire. It can provide quantitative data if questions are operationalized well, hence it preferred by positivist sociologists. The doubts of the responder can be resolved if the questions are administered by a moderator. If sample individuals are dispersed spatially, a questionnaire can be sent through mail or post, hence it is more practical. Questionnaire can also provide qualitative data, hence it can be preferred by interpretativists and phenomenologists. Example, Goldthorpe conducted a study based on questionnaire during his study of affluent workers. Questionnaires have high reliability as same question can be asked to many individuals. Since it can produce quantitative data, it can have high objectivity. Validity of research can be increased through collection of qualitative data. Hence, in many situations, questionnaire is the most practical way. It can improve validity, objectivity, and reliability of the research.